Assalamualaikum everyone. Today our topic of discussion is very important and it is about a topic of physiology and that is about adrenocortical हार्मोन। ओके हम इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इनकी नेचर क्या है, इनकी सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, किस तरह हो रही है और फिर इनकी डिग्रेडेशन कैसे हो रही है, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में बताऊंगी और पार्ट 3 में हम इन हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई हमें डिजीज़ हो रही है तो किस तरह हो रही है। ये हार्मोन ही एबनॉर्मल हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होती है। सो कौन कौन से डिजीज़ हैं उनके बारे में भी हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। दिस एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेशन क्या है इसकी, डेट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ बोथ किडनी। ठीक है, हमारी जो दोनों किडनी हैं उनके टॉप पर ये एड्रीनल ग्लैंड हमारा प्रेजेंट होता है। इस एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, वन इज एड्रीनल मेडुला एंड द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ओके, हम अपनी सॉरी हम अपनी किडनी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एड्रीनल मेडोला और एड्रीनल कॉर्टेक्स में। सो इसी तरह ही हम अपने एड्रीनल ग्लैंड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारा फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन ब्लू कलर में दिखाया है, डेट इज़ ओवर एड्रीनल मेडुला। वाइल जो बाहर मैंने तीन लेयर्स बनाई हैं, ये तीन लेयर हमारी एड्रेनल कॉर्टेक्स में इंक्लूड हैं, ठीक है ना। सो हम इन लेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो आप अभी ये याद रख लें कि इनर जो पोर्शन है वो एड्रेनल हमारा मेडुला है और जो आउटर ये लेयर्स जो हैं ये एड्रेनल कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, तो वो उसमें इंक्लूड होती हैं। नाउ अब हमारा एड्रीनल मेडुला जो है ये हमारा 20% है एड्रीनल ग्लैंड का कंपोजिशन में। देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा पोर्शन एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल मेडुला अकोमोडेट कर रहा है और ये फंक्शन रिलेटेड होता है हमारा सीएनएस से। सीएनएस हमारा स्टिमुलस सेंड करेगा इस ग्लैंड के इस पोर्शन को और फिर ये हमारे कुछ हार्मोन सिक्रेट्स करता है। दैट हार्मोन्स आर एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है, ये हमारे रिलीज़ हो जाते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारा 80% एड्रीनल ग्लैंड का हमारा ज़्यादातर आप देख सकते हैं, ज़्यादा जो बड़ा पोर्शन है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये फर्स्ट रिलेटेड है हमारे हाइपोथैलेमस से। आवर हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल्स एंड देन आवर एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज सम हार्मोन्स and this hormone is a group of hormones, so we cannot call only one or two hormones are released by adrenal cortex. Actually adrenal cortex is releasing various classes of hormones, so it is releasing a group of hormones and this group of hormone is called as corticosteroids. Okay, now we discuss what is the nature of that corticosteroids hormone. Actually all the hormones which are produced by adrenal cortex all are steroidal hormone. Okay, if we say that steroidal hormones mean that these steroidal hormones are definitely synthesized from lipid and the cholesterol molecules. So all these hormones have same chemical formulas but they have slightly difference in their structure and in their functions. So due to this difference in their structure and in their function, they are proceeding a lot of function and performing a lot of work in our body. Okay, now we discuss the types of these corticosteroids hormones and their role and how they play important role in our body. Actually, our body has two major type of corticosteroids. These two types are mineralocorticosteroids and the glucocorticoids. While the minor type, the hormone which is secreted by our adrenal cortex is androgenic hormone. It is released in very small amount. So we conclude that our corticosteroid major hormones are two, mineralocorticoid and the glucocorticoid. Okay, while the androgenic hormone they have same effect as testosterone. As all of you know that testosterone is a male sex hormone. Okay, it is present in male, so the effect of androgenic hormone is closely related to testosterone. Now we discussed what is mineralocorticoid or glucocorticoid and what type of hormones are released by these corticosteroids.
Okay, now we discuss it. What is mineralocorticoid? As its name indicate, mineralo mean they have their effect on the electrolytes or the minerals which are present in our body, in our extracellular fluid ECF. Normally जो हमारे बॉडी के अंदर the main ions which are present in our body are actually sodium and potassium. When we are discussing membrane potential, we discuss sodium and potassium. When we are discussing action potential, we are discussing sodium and potassium. So we see that our body has sodium and potassium as a main mineral in our body. Now, what are glucocorticoids? As the name indicate, gluco mean they have effect on the concentration of glucose. Okay, they can increase the concentration of glucose if our body have low glucose concentration. If our body have high glucose in our blood, then these glucocorticoids decrease the concentration of glucose in our body. Okay, now what is the function of these glucose? Actually we cannot accommodate glucocorticoid into the glucose. Actually it can function as a fat metabolism. It can metabolize our protein and it can metabolize our carbohydrates. So it is not only consigned to the glucose, it's have function related to the fat, protein and the carbohydrates.